माननीय विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने 57 के अंदर नोटिस देकर क्वेश्चन आवर बाजू में रखकर ज़रूरत पड़ी तो भी महाराष्ट्र में सबसे बड़ा आज जो विषय चल रहा है, बिजली का कनेक्शन करीब 65 लाख 70 लाख से ज़्यादा बिजली ग्राहकों का काटने का कनेक्शन काटने का काम राज्य सरकार की तरफ से हो रहा है। उसको रोक लगाई जाए, कोई भी कनेक्शन न काटा जाए, इस प्रकार की मांग की थी। सदन में देवेंद्र जी के मांग के ऊपर सम्माननीय उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी ने ये स्टेटमेंट किया, जब तक बिजली के कनेक्शन के ऊपर चर्चा सदन में नहीं होती और संपूर्ण चर्चा होने के बाद निर्णय नहीं होता, तब तक एक भी बिजली का कनेक्शन महाराष्ट्र में, शायद वो घर का हो या किसानों के कृषि पंप का हो, ये काटा नहीं जाएगा। ये बड़ा खुलासा उन्होंने किया और साथ में ही देवेंद्र जी ने ये भी मांग रखी कि जिन लोगों का 4 लाख से भी करीब लोगों का अभी तक बिजली कनेक्शन काटा गया है, उनका भी रिकनेक्ट किया जाए, फिर से जोड़ दिया जाए। उस मांग का भी फॉलोअप इस सदन में हम कर रहे हैं। ये आशीष जी, एक सवाल ये है कि लगातार ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि बिजली का बिल जो आप माफ़ करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भरना पड़ेगा, जो पिछला बिजली का बिल है वो भी भरना पड़ेगा और माफ़ करने का सवाल ही नहीं, तो पैसे नहीं। दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि बिजली मंत्री ये वहाँ पर गांव में रहने वाले जो साहूकार रहते हैं, उस साहूकार की भाषा बोल रहे हैं। उनको ये समझना पड़ेगा कोरोना के समय पर जिस प्रकार की स्थिति पूरे देश में और राज्य में किसान, मजदूर, गरीब परिवार के लोगों की है, उसमें तो सहूलत देने की आवश्यकता है। बिजली मंत्री भूल गए कि उन्होंने महाराष्ट्र को आश्वासित किया था कि हम कोरोना के समय पर जो बिजली का बिल आया है उसमें हम कहीं ना कहीं कम करेंगे, और साथ में ये भी कहा था कि 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। आज साहूकार जैसे गरीब आदमी से पैसा वसूलने की बात करने वाले मंत्रियों को ये समझना पड़ेगा कि आपने फ्री 100 यूनिट और दाम कम करने की बात की थी। इस बात को उजागर करने का काम हम करेंगे। पर भी साइबर हमला हुआ। मुझे लगता है राज्य में अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कौन से बहाने लिए जा सकते हैं, उन सभी बहानों पर एक बड़ी लंबी पुस्तक ठाकरे सरकार लिखे। राज्य में अगर किसानों को मदद नहीं कर सकते तो जीएसटी की बात करना, राज्य के अंदर गरीब, मजदूर, श्रमिक, 12 बलूतेदार, युवक, महिला, इनको अगर मदद नहीं कर सकते तो केंद्र की तरफ देखना। और जब अपने राज्य में हम बिजली कनेक्शन को सही तरीके से नहीं चला पाए, तब अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार के सबोटाइज का कारण देना। जब उनकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट की अपॉइंटेड IIT एक्सपर्ट की कमेटी ये कहती है कि इसमें कोई सबोटाइज नहीं, केंद्र सरकार के सम्मानीय मंत्रियों ने कहा, बिजली मंत्री ने कहा कि इसमें कोई सबोटाइज नहीं, तभी भी ठाकरे सरकार का कहना है कि हमारी राज्य सरकार कहे वो भी हम नहीं मानेंगे, हमारे रिपोर्ट को भी नहीं मानेंगे, केंद्र सरकार को भी नहीं मानेंगे। जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, जो लगातार भारत विरोधी लगातार लिखते रहता है, उसका रिपोर्ट हम मानेंगे। ये बात खुद के फेल्योर को छपाने के लिए किया हुआ प्रयास है। That there was a cyber attack that led to power outage. The center has denied it, saying that there was no sabotage, it was only human error. The report published by or statement made by Honorable Home Minister of Maharashtra regarding power outrage in Mumbai happened because of the sabotage, or there is some connection for sabotage from China. This report doesn't substantially provide any evidence. On the contrary, we feel the timing and the sequence
for making such statement by the Honorable Home Minister of Maharashtra leads to create many doubts and question. Why? Because before this cybercrime police station police report, some days prior New York Times makes a statement in their newspaper that there could be some sabotage, and after some days Maharashtra Cyber Police is publishing this report. This timing speaks a lot, number one. Number two, the state government of Maharashtra themselves have already appointed a committee of experts which has been constituted, where some IIT experts are also member. According to our information, these IIT experts or this committee has not made any such averment or a statement that there is some sabotage. So state government IIT experts report doesn't speak about sabotage. The central minister never spoke about any sabotage. Then when center minister and state government's own committee doesn't speak about sabotage, only after New York Times says the state government speaks about sabotage, this creates a doubt, and I am going to write a letter to the central government to investigate this matter in fresh, and we want to know the truth behind the same. We feel and apprehend that state government is making this report statement only to hide their failure and not to show the correct reason. आशीष जी उसी में अभी पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जो बीएससी पर 4 घंटे बंद हुआ था, वो भी बीएससी ठप करने के पीछे भी साइबर अटैक. विधानसभेच्या सभागृहात माननीय विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी 57 खाली नोटीस देऊन प्रश्नोत्तराचा स्थगित करण्याची आवश्यकता झाली तर तो स्थगित करून राज्यभरामध्ये वीज कनेक्शन कापण्याचं मोठ्या प्रमाणात जे काम राज्य सरकारच्या वतीने सुरू आहे, त्यामुळे घरगुती कनेक्शन बरोबरीने शेतकरी वीज पंपाचे कनेक्शन असे 65 लाखाच्या वर वीज कनेक्शन तोडण्याच्या कामाची सुरुवात राज्य सरकारच्या वतीने सुरू झाली आहे. 4-4.5 लाख कनेक्शन कापल्यासुद्धा गेले आहेत अशा पद्धतीची माहिती समोर येते. या सगळ्याला तातडीने स्थगिती द्या अशा पद्धतीची विनंती आणि नोटीसद्वारे प्रश्न उपस्थित माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केला आणि विनंती केली की सरकारने तातडीने उत्तर या विषयात द्यावं आणि हे कनेक्शन कापण्याचं काम हे तातडीने थांबल्या गेल्या पाहिजे. माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी तातडीने देवेंद्रजींनी उपस्थित केलेल्या नोटीसवर सभागृहात उत्तर दिलं की या विषयावर सभागृहात सखोल आणि संपूर्ण चर्चा होईपर्यंत संपूर्ण राज्यातील कुठल्याही वीज कनेक्शनला कापल्या दिला जाणार नाही आणि एका अर्थाने संपूर्ण राज्यातील वीज ग्राहकांना खूप मोठा दिलासा या निर्णयामुळे मिळाला आहे. बरोबरीने आम्ही ही विनंती केली आहे की ज्या लोकांचं आजपर्यंत वीज कनेक्शन कापल्या गेलं आहे त्यांचीसुद्धा जोडणी समन्यायिक पद्धतीने लगेच करण्यात यावी आणि त्या मागणीचा पाठपुरावा आम्ही करत राहू. या पद्धतीचा सभागृहातला विषय आपल्या सगळ्यांसमोर मी मांडतो आहे. दुसरा एक विषय, BSTच्या डेपोचं खाजगीकरण आणि त्यातला विकास अशी गेल्या 15 वर्षात मुंबईतील 6 बस डेपो याच्यावर खाजगी व्यावसायिकांनी मोठ्या प्रमाणात निवासी आणि अनिवासी किंवा एकत्रित असा विकास केला. ते फ्लॅट किंवा शॉप्स विकले, पण अजून BST तोट्यात असताना सुद्धा जवळजवळ 200 कोटीच्या वर विकासकांकडून BSTला मिळणारा निधी अडकला गेला आहे. या विषयात माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्या प्रश्नावर चर्चा करताना मी ही मागणी केली की ज्या वेळेला करार झाला, ज्या वेळेला बोली लागली, त्या वर्षांमध्ये असलेला TDR अवेलेबल FSI आणि त्यावेळेच्या DCR प्रमाणे अनिवासी किंवा वाणिज्यिक वापर याच्यामध्ये आज मोठ्या प्रमाणात बेमर्याद वाढ झाली आहे आणि बऱ्याचशा विकासकांनी सदर BSTच्या भूखंडावर
खाजगी किंवा सरकारी बँकेकडून निधी गोळा केला आहे आणि तो दुसऱ्या ठिकाणी वापरला आहे, या सगळ्याची सखोल SIT मार्फत चौकशी करावी. त्यावर सन्माननीय मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कराराच्या विपरीत जर फायदे विकासकांनी मुंबईच्या BSTच्या डेपोच्या भूखंडावर विकास करून घेतले असतील तर त्याची चौकशी करू, अशा पद्धतीचे निर्देश दिले. बत्ती गुल मुंबईत ऑक्टोबर महिन्यात जी झाली त्यामागे ज्यांचा हात आहे त्याची चौकशी करण्याऐवजी राज्य सरकारने सबोटाईज आणि चायनाचा हात असल्याचं म्हणून हात झटकल्याचा प्रकार केलेला आहे. आणि याच्यावर आमचा प्रश्न आहे, शंका आहे. याचं कारण की ज्या पद्धतीने हा रिपोर्ट कुठल्याही पद्धतीचा पुरावा किंवा विटनेस समोर न करता दिला आहे त्याच्यावर प्रश्न निर्माण होतात. नंबर 2, राज्य सरकारचं स्वतःचं जी एक्सपर्ट्सची कमिटी अपॉइंट केली होती त्या कमिटीने कुठल्याही सबोटाईजचा उल्लेख केला नाही आणि केंद्रीय वीजमंत्र्यांनी सुद्धा सबोटाईजचा उल्लेख केलेला नसताना केवळ न्यूयॉर्क टाइम्समधली बातमी आल्यावर काही दिवसांनी अशा पद्धतीचा रिपोर्ट आहे असं पब्लिश करणं हे सरासर खोटं बोलण्यासारखं आहे, स्वतःचं अपयश लपवण्यासारखं आहे. आणि म्हणून केंद्र सरकारने याची पुन्हा चौकशी करावी अशी आमची विनंती आहे.